Singh Chauhan as the next chief ministerial candidate. They also shied away from declaring any candidate in Chhattisgarh or in Rajasthan. There they may have some troubles of some different camps. But Narendra Modi made it very clear that this election is about Modi's guarantees, because these elections were also marked by this culture of a lot of guarantees that were being promised by all parties, not just the Congress or the BRS or others, but even the BJP partook in that exercise of giving guarantees, which is why Narendra Modi made this about Modi's guarantee versus others' guarantee, that that is bankable and the others are not. That has clearly worked for them. Let's also bring in some of our guests joining us. Anshul Avijit is spokesperson of the Congress Party. Sanjeev Srivastava is senior journalist, also joining us. Anshul Avijit, not a great day for the Congress Party. How do you look at the solitary win in Telangana? No, the solitary win in Telangana is not just an odd win. I mean, it's an emphatic victory. It's a highly inspirational victory. I'm less than, of course, ecstatic about our performance in the other states. But we'll come to that in a minute. First, our moment of glory, which is Telangana. I think that here, the first myth that has been busted is that, when a regional party establishes itself in a state, wins 2 terms, then the Congress finds it very difficult to surmount them and then establish a government. Well, we've done that. And this was a myth that was going around. It was a part of a propaganda, but it'll be highly sort of energizing for the Congress cadres now that we've been able to, put this myth at rest. I think the Telangana victory came on the backdrop of a couple of things that happened over the past years. I must remember that it's not just with the Bharat Jodo that the turnaround came. There was a lot of work being done, Shivani, in Telangana state that I've gone repeatedly to. But I think the critical moment was Bharat Jodo. I know you'll ask me a counter question that why didn't it work in Yeah. Madhya Pradesh and in Chhattisgarh. I'm prepared for that. But things don't work the same way in different places around India. It's a very, very diverse land. Okay, but Here, I I think that get your point, here, Anshul, but there is a problem yeah. for the Congress Party, right? You're virtually getting wiped out from northern, western Hindi heartland. Well, we did win last time. The defeats here, particularly in Madhya Pradesh, is completely baffling. I'm completely flummoxed by it. I cannot understand the margin of victory here. We'll go back to what the cliche suggests, our drawing board, but very, very seriously in try to X-ray this kind of defeat and the nature of it, when we were expecting actually to win over there Yeah. with 18 years of anti-incumbency, which we were certain was there on the ground. It was palpable. And also the fact that the government was stolen from us. You remember those dark days of democracy in 2020, when in the entire lockdown was delayed to get this government in power by what is called their Operation Lotus or whatever they call it. So the social parameters were pretty bad in the state, whether it's health or education. We had a number of good policies that were put forward by our leadership over there. Many of these policies were actually a cut and paste job by the BJP Okay. government. Okay, but The prime minister used to, yeah. the interesting aspect that's coming to light is you yourself said, Anshul, that while the Bharat Jodo Yatra went from Kanyakumari to Kashmir, it didn't quite touch Chhattisgarh, but it did touch states like Madhya Pradesh. For the Gujarat elections, we did question at that time, why didn't it go to Gujarat? Maybe it was a losing cause. But forgetting that, uh, at one level, the Congress is doing that Bharat Jodo. You are accepting it works in some states, it doesn't. Karnataka, it worked. Telangana, it worked. Not so much in other states. And you know what? A lot of commentary today is that there is a divide between North and South India. And some people are even trying to look down upon those who are voting for the BJP versus those who are not voting for the BJP. I think that kind of looking down is not the path that any political party should take. But do you believe that there is that divide? And is the Congress getting reduced to a South India party? Shweta Shalini of the BJP is also joining us. Let me take that question to her. The Congress can take solace in the fact they won their second South state in 6 months. The BJP has made some gains, but while you may win big in Hindi heartland, you're not quite conquering any of the other states. So you are a Hindi heartland party. The Congress is becoming a South India party. Is that so? Because, we had one seat in Telangana. If you actually look at the vote share, it has gone from 7% to about 14, 15%. And God forbid, I need to submit here that I've been across the state of Telangana. And if you look at the Modi Bharosa,
that is across in the state and in the hearts of people of Telangana, you'll be surprised. So I am sure what happens down south is that while they vote for the parliamentary election, their mandate is different. And while they vote for the assembly election, the thought process is slightly different. And that's That's not exactly just what we true for see. South, But that's true for none, many, many other states also. Look at what happened in 2018 in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and look what happened in 2019. so you need to understand that social engineering has really worked. The entire OBC class, and I should also say that the entire women have rallied behind Sri Narendra Modi. What Chhattisgarh saw and what Rajasthan saw were complete false promises from Congress. They fell flat on the face. And to point it out, this is the 55th loss of Shri Narendra Modi ji, of Rahul Gandhi ji. I was hearing Anshul ji speak about Bharat Jodo Yatra and how successful it was. You should understand that it was Bharat Jodo, but Congress Chodo. People left Congress, leaders left Congress, and a lot of ideology people rallied against the Congress and their leadership. Okay. Congress has been reduced to a party which is far, far left, and that's exactly where they are going wrong. But the people understand this. People are voting for development, and I'm sure South is with us as far as development is concerned, as far as ideology is concerned. But not Hindutva in is assembly very elections. strong in You may Karnataka. suggest, Shweta, you may suggest that the Lok Sabha election results will be slightly different, that the BJP is gaining ground, both in Telangana. It didn't really lose its vote share in Karnataka either. It may be on an upswing in Tamil Nadu. We'll know in the 24 elections. But, you know, the question is not that. The question is, for example, for Anshul, I'm not sure if Sanjeev Srivastava is with us. If he is, okay, let me go across to Sanjeev Srivastava. Sanjeev, do you believe that Yeah, there is indeed a pattern emerging? Particularly for the Congress party, it could be worrying that while they won two big southern states and even Telangana win is a good win for them, beating a regional party, they're kind of shrinking as far as the rest of Indie heartland is concerned. Are they becoming a South India party? I think Shivani, you are bang on target. Congress party should be very worried. We were seeing some kind of a north-south divide, and that was largely a function of the BJP's core issue of Hindutva and Mr. Modi's charisma, both being there on the ground, but not to the same degree as it is in north of India. So Karnataka and now Telangana is an example of that. But together, southern India accounts for about 150 seats, up 4 or 5 seats here and there. And it's the same thing which happened long, long back to Mrs. Indira Gandhi when post-emergency in 1977, she swept south and lost the entire north, and she was voted out of power. So south is critical, important. We are one country, one India. But let's face the facts. The numerical arithmetic in the Lok Sabha is decked in favor of central, western, and northern India vis-a-vis the south. So if the party, Congress party, is facing the kind of drubbing that it is in the north. Now, Chhattisgarh, they're supposed to win. Everybody and his uncle was talking like that. They have lost it. MP, they were supposed to have a wave against Shivraj and BJP. Even in Rajasthan, the margins are pretty big And between what the we find out BJP today, and that there is a Congress. wave in favor of Shivraj and BJP. Yeah. And yes, Congress has managed a respectable loss in Rajasthan, but a loss is a loss. I really think today's result, and one should never be too early to jump the gun, but they really clear the text to a large extent and remove so much of uncertainty around BJP's prospects in the national elections in a few months' time. Absolutely. Because But these are I do just the want to take booster they were forward what waiting for. Shweta said, that actually the BJP is expanding in the south versus the fact that Congress is shrinking in the north and the west. But let me bring in True. Anshul, Avijit back on that. Anshul, Bharat Jodo at one end, but also this divide that sometimes even Congress leaders and sometimes even Congress supporters are talking about. I don't understand, one, ideologically and messaging wise, how is this a good message that, oh, south is voting for us, north doesn't vote for us? Is that the right projection that the Congress party would like to make, that there is a divide?
Personally, Shivani, I don't like a dichotomous relationship between North and South. I mean, it's like one of these old cliches that used to happen. I don't agree. I think this is the one big land, and we have to earn the trust of the electorate in all the states. Hmm. I think that what has happened in North India, coming back to these elections and their results, what has happened in these three particular states where I think that we have performed terribly, rather disappointingly in Chhattisgarh and Rajasthan, Hmm. and I'm completely flummoxed by the reaction in Madhya Pradesh, that we have I don't think it was anti-incumbency in either Chhattisgarh or Rajasthan, because we've managed to retain the vote share. It remains by and large the same as it was. What has happened is that BJP has gained at the cost of many other factors. We have to go into what these kind of factors was. Maybe the machinery on the ground was better. Maybe their propaganda machinery. They're really good at No, come propaganda on. that cuts across. Anshul, if you win Karnataka No, no, and whatever reasons Telangana, there are, it cannot be yeah, that those Shivani, wins are kosher, but BJP's wins are not kosher. They come because of some non-kosher factors. no, no, Come there on. has to be a reason, and we have to go into those. Yeah, We the have to reason excavate is those that they won. reasons. It's as simple as No, no, that. we have to go into Even this, in but Karnataka, that's not BJP very didn't lose useful its for vote us. share. We know how it works. We know how vote shares and seat conversions work. Yeah, so I am just simply trying to tell you Hmm. that we want to know the reasons why it won. There may be many reasons why things people Shouldn't the win. Congress have We known know all over the already? world. No, no, Shivani, just one final point. We know all over the BJP desperately, by the face of the Prime Minister, tried to nationalize these elections. Well and good for them. But nationalization of this election means all kinds of statements that came out. Maybe that worked. Maybe the notional content made people set aside in Madhya Pradesh, for instance, the economic woes, and vote for larger sort of, emotional issues, which we think were dearer. We don't really know. We have to go into that. I think, I okay, do agree it's fine. And we have to think about what we can do to regroup and get back to the job. I'm just saying, before 2024, do you have that much time? Of course, nobody can No, no, write anybody off this shouldn't be politically, dealing, but now, we've what, no, 3 months to dealing go this before from the next election 2024. cycle. No, no, please delink this from 2024. Otherwise, last time what happened was the BJP lost these three states and then won in the general election. So if that is something to go by, then we're on a sound footing. So I don't understand these kind of Yeah, but that this is the trailer for. the factor that worked for the BJP in 2014 is the same factor that works for them now, which is that they have a strong prime ministerial candidate. Now he has delivered for 10 years, so he's even stronger. Where is that contender against him? But let Shweta Shalini come in. Come in. She wanted to respond to what you were saying. Yes, Shweta. See, Shivani ji, there are a couple of things that I want to add on. For the family that Anshul Avijit ji comes from, I would want to really tell him that what has really worked in BJP's favor are these social engineering schemes that have actually been implemented by these states and taken to the last man who is at the grassroots and needs that change. So Antyodaya has worked. What has worked is the Garib Kalyan Yojana that have really worked. And what has also worked in BJP's favor is the call of the people, which says that people are now going to look for not politics of parivar and politics of corruption, but actually politics of performance. Because here, what we have voted for, what people have voted for, is the Modi guarantee. Because Okay. they know that this is one guarantee that they will get, they will ensure that they will utilize these schemes for their own benefit, for the benefit of their children, and for the benefit of the household. And Okay, that's no, the I reason understand why that. Of course, you the see the schemes, Dalits, the both of the tribals, the national women government, actually rallying behind Bharatiya Janata Party. no, the schemes of the national government over the last 10 years, I don't think even the worst critics of the BJP can take away the fact that delivery has taken place. And when you have that quote unquote double engine sarkar, a lot of those deliveries have been stronger. I want to step away from that because I think there are multiple patterns to read into this. Let me go to Sanjeev Srivastava once again. Sanjeev, the dichotomy that we're talking about between what the North is saying and versus what the South is saying, Shweta had the right point that while the Congress is shrinking in one half of the country, at least the BJP is growing. So we cannot say that there is no BJP in the South. Well, then, yes, you're right. Actually, in Karnataka, they retained their vote share. Yes. In Telangana, they've increased their number of seats which they have. Actually, they could have done much better in Telangana had this perception not gained ground
that the real party to take on KCR is Congress, not BJP. Yes. BJP is soft on KCR. So, in a manner of speaking, the BJP shot itself in the foot because of some strategy and mistake. But the Congress, there is no dichotomy. There is no point in having these kind of academia words being used. The Congress is in serious trouble. This was an election which was for them to win in Chhattisgarh and MP, and they were really trying or putting up a very brave fight in Congress. And but the results have come, and what now looks like a house of cards has been completely shattered, and they cannot shy away from this. So I expected the Congress party in the opposition to put up a really good fight. This India alliance, the caste combinations, the regional coalitions, the RJDs. Yeah. I mean, if after Bharat And Jodo, the the NCP, successes in Shiv Sena, Karnataka Maharashtra. were But this attributed kind to of that. a verdict, yeah. No, if after So Bharat Jodo, the successes this of that was verdict, attributed to that, we also have to ask the yeah. question that clearly that didn't work in Madhya Pradesh, for example. Clearly that didn't work in And if Rajasthan, it is, for example. the biggest point really is, if it is not working for them in a state election, Yes. where Modi is supposed to be weaker vis-a-vis a national election, he's supposed to be a weaker face, then God save them in the national elections. I also When feel personally that if we met after people doing in a Bharat Karnataka on Jodo, the road, a party where they will be said we are seen as voting. celebrating some sort of a divide between how South Indians are voting versus North Indians are voting. I think it takes away from the message of a united Bharat Jodo, because then the Congress itself is restricting itself to one part of the country instead of saying, no, we want to be relevant in all of India. Anshul wanted to come in. Yes, Anshul. First of all, I never said the Bharat Jodo has worked in different places in different parts of India. I mean, you should have seen the crowds in Rajasthan and Madhya Pradesh. The fact that it hasn't articulated into votes, the kind that we have seen, doesn't mean the lack of success of Bharat Jodo. It was essential. We did it. We'll do it again, regardless of whatever its kind of electoral outcomes. What it does is it galvanizes cadres into believing in the Congress party again, right? So, there could be multiple reasons and composite number of reasons why the BJP has won. You might have listed many. I may agree, I may not agree. We'll go back into the drawing board. But the fact that there is a common fallacy that the Congress is not shrinking in the north when it is able to retain its vote share. You can only say that if there was a huge amount of anti-incumbency, these kind of states where we were against the Chief Minister Ashok So Gehlot, I'll tell you what, against Mr. Bhupesh. I'll put it in a slightly It different wasn't way. there. You tell That me if wasn't there. I'll put it in a slightly different way. You look at states like Uttar Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, now Madhya Pradesh. At least two of these states, BJP has a long run, and in two others, they've managed back-to-back terms, which is unheard of in these two states. Compare that to the fact that you had a one-term government in Rajasthan and in Chhattisgarh, you couldn't retain it. What does that tell you? No, no. So Rajasthan has a historical ambivalence that you know about. Every 5 years is whatever is that revolving door cliche. It's small consolation to us. I'm not saying that is an excuse that should have happened, but it changes its government temperamentally. Maybe it's different than other states. It changes. It's known to historically change its government. It shouldn't have happened. We've still put up a reasonable performance over there. There has been no anti-incumbency. The schemes of the chief minister have Come on, performed very Anshul, well now on the come on. ground. No, that's unfair. How can you say there was no anti-incumbency? I don't think so, because the vote share didn't decrease, right? So what are the But how is that happens anti-incumbency sometimes. manifested? That happened in Karnataka. The BJP government got booted out, and that too by a very big margin, by not losing its vote share. Would you say there was no anti-incumbency for the BJP government in Karnataka then? We worked on a positive campaign of, by the way, this word called guarantees, which the prime minister has taken over, is basically our language. We turned our yojanas into guarantees because Yes, we that's said true. we are going to deliver over them immediately. But he Most pipped of you their, in lot of that. their policies. He pipped Sorry? you in that. Would you concede that? By taking over No, the Congress term of a we have to go. guarantee and a successful term of a guarantee, he flipped it in BJP's favor. No, no, I don't think that has worked. He tried to nationalize the elections. He went to different places talking about calling, everything a terrorist organization, the Congress, all kinds of things. They deployed people who were polarizing, particularly an MP who has the worst kind of vocabulary in parliament. He was deployed in Rajasthan. They, through the entire communal kitchen sink,
wherever they went. It's a different kind of nationalization of politics that we saw. I don't know whether that yielded results. I don't believe it to be so. I think people are much more resilient than that. I don't know what really worked there. I have to go to the drawing board. But I can say, I think this is wrong to assume. You can assume it, but you can do it at your own peril, that Congress is shrinking. No. Okay. Yes, these are terrible setbacks, in particularly in Madhya Pradesh. I would say that again. I'm not shying away from the fact. I'm not ecstatic over them, but we will certainly regroup and get back. I think we were going on the right track. The organization was pretty strengthened after this. What has happened? Well, we'll have to think about it. Okay. The other big issue for the Congress party or the larger opposition alliance, and there is an alliance now, although I don't know what the future of that alliance will be, the INDIA alliance, is that a lot of the alliance partners are very upset with the Congress party. Shweta Shalini, you want to come into on that? You've got the JDU, the RJD, the NC, the SP, all angry with the Congress party, attacking the Congress party. What is your take on this? You named. And I think they are very happy because now, while they talk within the India alliance partners, Congress is on a weak footing and they are sure going to negotiate much, much better. Is the mindset right now in the alliance? Now, if this alliance was ever, it was never on the fact that it has to be win-win for either the country or them. It was always a lose-lose alliance, and that's why I don't think that it exists now or it will exist further. But having said that, if you actually look at the attitude of Anshulji on screen today, you will realize why Congress is losing badly. Because after all, ego does not pay. And this comes down from their own leader. Because ultimately, we have been taught by our leadership. Today is the time that we are winning, but we need to be very, very humble in victory. We Okay. again need to go back to the board to understand where we have lost and what has made us click. What is it that the expectation of the people is, so that we can carry it on? We have just about 3 months. See, BJP is like a student that prepares for the exam every single day, and that's exactly what we are proud of. We are proud of our karyakarta and the belief that we have in our own leader. So this Modi guarantee is might be a term that was coined by Congress, but you need to understand that those guarantees meant the red diary. It meant the paper leak scam. It meant their chief minister getting the money from something called as Mahadev app. And trust me on this, I will again say it's not South India, it is Indians from the South who will definitely vote for Hindutva, because Hindutva is still very, very strong. If you go to the grassroots or the villages of Telangana, Andhra, Karnataka, and Tamil Nadu, you will find this huge rally towards Hindutva. And Okay. I'm I sure think the we proof will go will back be to the drawing in board to the understand how we can eating. increase our We will have vote to share wait. and our numbers there. Shweta, we will have to wait for the 2024 results to really see if the BJP makes those gains that it has been talking about in southern states. Some of those gains we've seen, for example, in municipal elections, even in state elections, vote share has increased. But we'll have to wait and see whether those conversions for the Lok Sabha seats happens, because the BJP will also want to expand from what it already had. It already had most of the Hindi heartland in 2019 as well. If it has to lose some, it also needs to gain some in other areas. But you did mention this Hindutva card or the Hindu identity that was pitched against the caste identity these elections by the Congress party and even some of the other alliance members of the opposition. And Anshul, you'll have to agree. Now, this is one of those things that did not work. That whole caste census pitch, the fact that jitni abadi utna hak, this was clearly aimed at dividing the kind of larger Hindu spectrum voter that had come behind Narendra Modi and BJP over the last 10 years. But it did not work, especially in these Hindi heartland states. So what it actually did was throw the BJP into complete confusion, because they didn't know how to react to what we called a legitimate exercise, a caste census exercise, which x-rayed society and told us which the most disadvantaged sections were, so that the money in the government treasury could go directly to them. It was a way of figuring that out.
So what were the different kind of reactions that came? Even now, they're not clear. If you ask Shweta ji, she wouldn't be able to tell you because the Prime Minister says that no, there is no caste. There are only poor people in this country. Mr. Sushil Modi says, no, no, this was our idea. The Home Minister says, no, the numbers coming from Bihar are all fraudulent, or we'll think about it. Somebody else, your Ghatak Dals are asking that, no, no, you should get it done. So there is complete kind of confusion over this matter. Our idea is not to get votes over it. It's a legitimate exercise in which you get to know who the most disadvantaged sections of society are, and accordingly help is given out to them. I mean, Shweta ji pointed out a few things about me and my attitude. I think I'm forgetting my manners. I should have said this right in the beginning. I do offer my congratulations to Shweta ji and the BJP for what has been quite a remarkable win in Madhya Pradesh, I would say, certainly, and the other states as well, where we were expected to win. So yes, the credit is due to them. This is democracy at work. You have to earn the trust of the people in whatever manner they've done it. They have managed to do it in this election, so the credit has to go to them. But we are going to try and figure out the way it is being done. I do think I come to that point, and Shweta ji pointed it out as well. The movement of Hindutva in this election, right? She said it quite, in a manner which is quite brazen. This is what the Prime Minister did, and trying to tap emotional appeal so that it surmounts every single other consideration. So this is what they try and do in every election. We expect more that from them in the coming days now, because I think that somehow they feel that this is going to work. So watch out for more polarization, more hatred, more spewing of venom from the BJP and the people it deploys. Okay. These are visuals now coming in from the BJP headquarters. We're waiting the arrival of the Prime Minister there. It is expected to happen any minute now, and we are expecting that he will also speak. It will be interesting to see what he says about the 2024 battle now, because even in the last cycle, he had kind of mentioned that there is a confidence as far as the BJP is concerned for the national elections. Uh, Let me also quickly try and get a voice. My colleague from BJP headquarters will do that in just a bit. Shweta, I know you want to come in, but before that, can I just take Anshul's comment on some of the barbs and the jibes that are coming in from your alliance partners, TMC, JDU, RJD, SP. Even Omar Abdullah is saying today that what was the harm if you gave 5 to 10 seats to the Samajwadi Party in Madhya Pradesh? You spoiled your relationships with them, and you could barely stand on your own in Madhya Pradesh. Is the Congress antagonizing its own allies? I mean, comments are said. One is that first of all, we won Telangana, but if we've lost these three other states, comments are certainly made between alliance partners. I wouldn't pay that much heed to them. They're all important. They're all alliance partners. The India alliance, to my mind, is exceedingly robust. We're going to meet again pretty soon and activate it. There was a brief hiatus, which we said, because we had to focus on these elections. Now that this process is over, whatever has transpired, whatever has gone on, in heat of elections, things are said. In the heat and dust of elections, in the panic, in the pressures of electioneering, many things are said. That is politics. Things are said. You must go back to UPA when so many things were said. I mean, that didn't prevent UPA 1 and Okay. UPA 2 of having two very strong governments, which actually delivered and gave a growth rate of over 8% over a decade. This is a growth rate that we gave as a gift to this government, which they completely, contorted. It came into minus because of that. And therefore, you have such high levels of inflation and poverty and unemployment, because they certainly messed up the entire economics, the economy. Right. So, I mean, things are said. We will get over them. We will negotiate with them. There will be Okay. compromises. There will be dealings. So that is not something that I'm particularly concerned about at this stage. Some of the numbers you're mentioning about economics are going to be challenged. And I think it's, again, the kind of narrative that hasn't worked beyond a point. But I'll leave that aside because I don't have time enough to go into that unemployment rate or inflation rate and growth numbers from UPA 2 terms to now. But I do want to, Shweta, I'll come to you in just a bit, but I do want to go across to my colleague Arun also, who's joining us from the BJP headquarters. Arun, just give us a sense. Time was 6:30. What's the ETA on the Prime Minister's arrival? माता की भारत माता की Well, see, Prime Minister Modi
is about to reach in a short while at BJP offices extension area, and you can see the gathering of Bharatiya Janata Party Karyakartas. That is the stage which you see right behind me is the place from where Prime Minister Modi will be addressing this massive gathering, and all these people who've come here, they've come from different parts of Delhi, NCR, to meet and to see Prime Minister Modi, and we have few BJP कार्यकर्तास with us. क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं सर? विनोद कुमार है, कानपुर से आया है। अच्छा बताइए कि जो ये 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, कैसे ये जीत हुई है, किसको इसका श्रेय देते हैं? मोदी जी को ही सारा श्रेय जाता है और उनके सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। अच्छा आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बुराड़ी विधानसभा मुकुंदपुर मंडल से आया हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो लग रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आप लोग जीत गए, कैसे हुआ ये सब, किसकी? वहाँ तो केवल और केवल मोदी मैजिक है जी, केवल मोदी और मैजिक है, और इतनी बड़ी बहुमत ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का मैजिक है। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं, महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भाजपा को वोट किया है, कितना बड़ा रोल देखते हैं इस जीत में महिलाओं का? बहुत बड़ा रोल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका आकलन बहुत बढ़िया है। जो बहना लाडली बहना योजना थी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने चलाई थी, और हमारी डबल इंजन सरकार ने जिसको पालन किया, और उसका जो रिजल्ट आया वो बम्पर रिजल्ट रहा। बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री चुनने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी? बहुत सारे चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार। देखिए हर बार ऐसे ही होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में नाम कोई और चल रहा था और एकदम मोदी जी की योजना में था, उनके नाम में मन के अंदर कुछ और था, तो एकदम योगी जी का जो नाम आया तो आज योगी जी कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश को कहाँ ले गए हैं, तो इसी विचार से मुख्यमंत्री का नाम भी ऐसे ही निकल के आएगा। We have already seen BJP chief JP Nadda, who's already here, Union Home Minister Amit Shah, Defense Minister Rajnath Singh, INB Minister Anurag Thakur, Smriti Irani. They all are present, sitting there at the front, and Prime Minister Modi, will reach here any moment from now. You can see all these BJP karyakartas who've gathered here, this new office of Bharatiya Janata Party, and in fact, this is a passage in between. On the both side, you will see BJP Karyakarta. There is a space which they have left for Prime Minister Modi to walk, and this is almost a distance of 100 meters from the gate to the stage. So Prime Minister Modi, of course, will be coming through that route, and on both sides, people will get opportunity to see Prime Minister Modi and also to shower him with flower petals. Arun, I'll keep coming back to you. Just stay with us. Let me give a final minute to Shweta Shalini also. Shweta, you wanted to come in about the overall battle for 2024. The BJP, of course, must be extremely buoyant after these results. But we have seen that state election results don't matter as much on what happens as far as the national elections are concerned. Shivani, before I say anything, I humbly accept the congratulations from Anshul ji and extend the same congratulations to him for Telangana. Having said that, he should also give us some gratitude because the kind of anti-incumbency that we created as BJP in Telangana, that is the same pitch that actually Congress played on and finally is there to exist. Second, he spoke a little bit about polarization. He should not forget that in Telangana, they exist today and they've won today because of the 4% reservation that they spoke about to Muslims. And it is the Muslims that were behind BRS are now rallying behind Congress. And that's the reason why they see an upsurge of numbers and seats. Having said that, he also talked about the confusion about the caste census within BJP. Let me be very clear. The people have answered this question of his. Jitni abadi utni haq. People today want development. People today do not want to be split into castes and religion. What they are talking about is India being the next superpower for them to actually be a building stone of the future of Bharat. And that's exactly what BJP is talking about. Well, if the challenge is turning out to be this large in state elections, one can only imagine what will be the challenge like when it is going to be actually Narendra Modi on the ticket in the Lok Sabha election. So I think the Congress does have something to worry about there on the back of these results, and possibly even the larger opposition alliance, because by these results, the message that goes in, of course, is that Narendra Modi still continues to be the #1 choice, very strong.
and that could lead the BJP to a third consecutive term, which has never happened before. I do take this time to thank both Shweta Shalini, Anshul Avijit, and also Sanjeev Srivastava, who joined us earlier. We're going to slip into a very short break. On the other side, we'll take you back live to the BJP headquarters. Go Power.
staying with us. We're going across to my colleague Arun and Siddhant. Arun, first to you. I believe the Prime Minister has left his office or his residence, so he must be arriving at the BJP headquarters very soon now. Well, that's right, and it's a very long wait for BJP karyakartas who've come here on this special day for Bharatiya Janata Party when they won 3 states, and in fact, as you also mentioned, that Prime Minister Modi has left from his venue, and here everybody is waiting for Prime Minister Modi. Once again, I would request my camera person to just show a glimpse of sea of people who have come here to witness this occasion. Remember, since morning we've been here at BJP office, and BJP was very apprehensive initially, and when they realized that the trends are in favor of the party, therefore we saw people started gathering here at BJP office to celebrate this occasion. And as has been the tradition for Bharatiya Janata Party, that Prime Minister Modi comes to BJP office to thank voters and BJP karyakartas who worked on the ground. And today also, on similar lines, Prime Minister Modi is reaching here, and he will of course be welcomed by Bharatiya Janata Party karyakartas, and in fact all the top ministers, starting from Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Anurag Thakur, Smriti Irani, they all are present here, and also of course BJP Chief JP Nadda. Quickly go to people who've come here to witness Prime Minister Modi's arrival and to welcome him. आप कहाँ से आए सर? करावल नगर से। करावल नगर से आए हैं। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इन 3 राज्यों में? जिस प्रकार की जीत हुई है, निश्चित लगता है 2024 का आने वाले दिनों के अंदर चुनाव के रिजल्ट को इन तीनों प्रदेशों ने बता दिया है। इसी प्रकार का रिजल्ट अब आने वाला है। क्या चीजें आपके फेवर में गई? क्या चीजें मानते हैं इन 3 राज्यों में जिसने आपको मदद की? इसमें मोदी जी की जो कार्य कुशलता है उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो जो है जीत का मुख्य कारण है। Shivani, we are told that women in large numbers supported Bharatiya Janata Party. We have one of the ladies. Ma'am, आप अभी सुनने में आ रहा है कि महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया है वो एक बड़ा कारण पार्टी मान रही है जीत का। आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जीत निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज देखिए तीनों राज्यों में करके दिखाया है मोदी जी ने, और हम सभी महिलाएं क्या पूरा देश ही बहुत खुश है मोदी जी से। गारंटी से ना, गारंटी बिल्कुल गारंटी से है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी की गारंटी है। गारंटी किस चीज की? मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी बोलते हैं वो गारंटी करते हैं, ऐसा कहना है? किसको गारंटी में मान रही है। अब आप देख रहे हैं 2024 का रास्ता साफ है। ऐसा है, ये चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में एक सरकार अच्छा काम करती है तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स होते हैं ये प्रो इनकम्बेंसी में भी कन्वर्ट होते हैं। जिस तरीके से वहाँ काम हुआ है, एक तरफा वोट पड़ा है। राजस्थान में इनको नकार कर वापस भारतीय जनता पार्टी को लाया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये सारे सर्वेस कह रहे थे कि कांग्रेस सारे सब फेल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मुमकिन है। That's the slogan and nara of BJP Arun, workers just here stay at with me BJP office. very quickly. I'm just going to go across to my colleague Siddhant also, who's also at the BJP headquarters. Some fresh visuals are now arriving, and I believe the program on the stage possibly kick-starting. But I'll go quickly across to Siddhant as well. Siddhant, the Prime Minister's arrival being waited upon very keenly. I think only a couple of minutes maybe to go. Well, that's right, Shivani. And you know what I'm witnessing here right now is that, first of all, Prime Minister is going to arrive in some time from now. This is what we have been told. He has already left from his residence. The stage is all set. Shivani, it all started with Modi ji ko laane wale hain, achhe din aane wale hain, with this nara, with this slogan in 2014. And here we are in 2023, 4 months ahead of the general election. And now the message that BJP karyakartas have is sapne nahi hakikat bunte hain, tabhi to hum Modi ko chunte hain. So with this message, large number of karyakartas in fact have gathered at BJP office, Shivani, and the stage is all set to celebrate the historic victory of Bharatiya Janata Party in 3 states. So now the slogan is
सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं, और मोदी जी की गारंटी की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है. So such kind of messaging is being done within the Karyakartas at BJP headquarters. And in fact, I have spoken to large number of Karyakartas. They have come from various parts of Delhi NCR. They all are filled with energy and enthusiasm. They're celebrating and they're waiting for Prime Minister's arrival. Also, interestingly, Shivani, this particular election was crucial and significant for BJP in terms of narrative. You know, there were a lot of narratives which were being floated by the opposition party in terms of Mandal Kamandal politics, which the efforts were made to bring it back into the mainstream. And there were other factors also. Now, these elections didn't have any face, any regional face, any local face. These elections have been fought purely on Prime Minister Modi's face, and that perhaps makes him a taller leader once again. Yes, and you know, I'm wondering, Siddhant, I'm wondering over the last, let's say, 8 to 9 months, the pattern has been that the Prime Minister is looking extremely confident, quietly confident about 2024. I think in one or two comments, he has even suggested that much. I'm wondering if today is going to be the official kickstart of the 2024 battle or campaigning, because we've 3 months to go before elections are announced. It could very well happen from this stage tonight by the Prime Minister himself. Absolutely, Sean. You're absolutely right, and perhaps we can also expect Prime Minister to lay a roadmap. Also, he is going to celebrate with Karyakarta. There's going to be mention of the victory that BJP has registered in 3 states, but also is also going to lay a roadmap as far as the 2024 polls are concerned. There are multiple factors, Shivani. I mean, more than 10, you and me cannot even count how many factors have worked in favor of Bharatiya Janata Party this time around, from Ram Mandir to foreign policy to whatnot. You know, people here come and they explain to you the work that Prime Minister Modi has done and why he is popular. I mean, that is something which can be counted as his achievement, that after being in power for 9 years, people are here on ground explaining and telling to you how Modi is bringing difference to the country, how Modi is doing work for the country. I think that is... the BJP has kind of done this over and over again since 2014, which is buck quote-unquote anti-incumbency. The BJP has for the last 4-5 years, in fact, been talking about pro-incumbency. The approval ratings of the Prime Minister continue to be very high. In fact, he has some of the highest ratings for any world leader in any country. And even after nearly 10 years of his continuous term, it doesn't seem like there is quote-unquote any fatigue. It may have been talked about in Madhya Pradesh, but certainly at a national level, nobody's even talking about it, not even his worst critics. Siddhant, thanks a lot for joining us. Arun, I'm coming back to you. It looks like now some of the other leaders, ministers have started arriving on the stage. We've got Amit Shah and Rajnath Singh taking the seats on the sides. And of course, in the middle is going to be JP Nadda and the Prime Minister himself, flanked by Rajnath Singh and Amit Shah. Arun. Well, that's right. That's right. You can see on your screen that Union Home Minister Amit Shah has taken place on the stage. On the corner, another corner, you have Defense Minister Rajnath Singh. But behind that, you can see Modi ki guarantee. Now the message is very clear that whatever guarantees opposition parties are giving, but it is the guarantee of Prime Minister Modi on which they are believing. And in fact, throughout the day, we have spoken to many ministers, the likes of Arjun Meghwal, Prahlad Joshi. When I asked them that, in Rajasthan, Ashok Gehlot has promised various things, be it his medical insurance, 25 lakhs, or various other things which he was providing. But still, people of Rajasthan believe Prime Minister Modi, and that is the reason why you have Bharatiya Janata Party winning in Rajasthan. So that is something which has been a firm force behind the success of Bharatiya Janata Party, and everybody. Arun, just coming in here, the Prime Minister's car is now inside the BJP headquarters.
His cavalcade has made it in. He's going to be welcomed by some of the leaders of the BJP, especially BJP President JP Nadda. That is the protocol really that they often do follow. Other two ministers in attendance, Rajnath Singh and Amit Shah, the two senior ministers, have taken their seats though on the podium, on the dais itself. And the Prime Minister is all set to be joining them on stage. So lots of people that have collected. This has become routine. This has become almost expected after major results for the BJP. And they have had many successes to count on over the last 10 years. Since, those results in 2013 state elections, some of the larger Hindi states in 2013. And then, of course, the massive shift that took place in Indian politics in 2014. The BJP has not has seen some reversals, but overall they've continued to be fairly strong nationally, and especially in certain particular states where they're coming back to power again and again. The Prime Minister, all expected at the BJP headquarters. We're going to get his first visuals in just a minute from now. But in the meantime, let me also hand over to my colleague Rahul Shivshankar, who's joining me. Thanks indeed, Shivani. Yes, these pictures, viewers, momentous pictures coming from the Bharatiya Janata Party headquarters. The Prime Minister there is probably going to be greeted as he steps out of his car, his armored vehicle, by Mr. Nadda, who is, of course, the President of the Bharatiya Janata Party, who will walk him along that resplendent gangway that has been created for him so he can move inside the building to the podium, where already waiting for him to felicitate him is the Union Home Minister, Mr. Amit Shah, the Union Defense Minister, Mr. Rajnath Singh. Now, viewers, this is as much a victory lap for the Prime Minister as it is for just about every cadre of the BJP that believes in him. So this is a tradition that has been begun under Mr. Modi, where Mr. Modi, after every hard-won or even lost victory, comes to the BJP headquarters to address the party cadre, and then, of course, viewers, thank them for the service, for the sweat, the blood that they expend in service of the Bharatiya Janata Party and, of course, the nation by extension, because the BJP believes that it's being voted in to build the nation. And there you can see the Prime Minister. He is waving and he is greeting, or being rather greeted, by all the party workers there, each one of them lavishing love and are very, very grateful to the Prime Minister for leading their party to a victory which one would have to say, viewers, came against all expectations. We were all prepared for the humbling of the BJP. Remember that. The Congress, influential pundits, and even exit polls had predicted an insipid BJP performance in this round of assembly elections, which was dubbed the semi-final. But it didn't pan out like it was predicted, did it? No, viewers, it didn't. And there you can see the Prime Minister there in a charcoal grey waistcoat with a charcoal grey kurta and a pajama, accompanied by Mr. JP Nadda, the Bharatiya Janata Party National President. Mr. JP Nadda is the custodian really of the party, and the Prime Minister is being flanked by him as he is going to be led into and onto that podium. We'll go across to Arun Dhanda, who's at the BJP headquarters. This, Mr. Dhanda, has become quite the ceremony. Whether the BJP fares well or it ends up on the losing side, the Prime Minister never fails to come here and thank party workers. Well, that's right, Rahul. It has been a tradition. Whether BJP performs well or not, Prime Minister Modi ensures that whenever there is the election result, the party cadre and people have worked on the ground, and therefore they deserve his words and his
ways, and therefore today, in fact, when there is a special day, in fact, especially Chhattisgarh, we've been speaking to various BJP leaders. They were not confident as far as Chhattisgarh is concerned, but today, when the results are out, it is completely contrary what they were saying. So the clear indication is that Prime Minister Modi's magic once again has been a game changer for the party, and we just saw the visuals, and Prime Minister Modi shaking hands with Defence Minister Rajnath Singh, which we see in such situations on the dais. But today Prime Minister Modi shaking hands with Rajnath Singh, and of course you have BJP Chief JP Nadda, Union Home Minister Amit Shah. They all are there on the stage, and you can see these lines behind Modi ki guarantee. And when Prime Minister was entering, the only slogan which everybody was chanting was Modi ki guarantee. Modi ki guarantee. I think that's something which has beaten hands down Congress and other parties in these elections. Well, Mr. Danda, thank you very much. Atul, thank you very much for that input. JP Nadda leading the felicitation. Let's listen in for a few moments. बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं, पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं, और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front, और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है, वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित,
शोषित आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण। ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडिया अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा, ओबीसी 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 की चिंता नहीं। ये नए नए लोग, ये इंडिया अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे। और सबके समाज का, सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है। ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की। क्या उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है? ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? और एक और नेता पैदा हुए, मैं ना माफी मांगू, मैं ना माफी मांगू, यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गया है, बल नहीं गया। और ये चुनाव के नतीजे ऐसे नेताओं का बल एक बार नहीं, अनेकों बार बल खत्म करते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में,
क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए। मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है, और कोटि कोटि उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देकर के ये सफलता दिलाई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष और आपसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ा और यशस्वी हुए हैं। उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे, रणनीति क्या है, रणनीति क्या है। मैं बार बार बोलता था, रणनीति पर्दे का विषय होता है और रणनीति समय पर ही खुलती है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को, जो बारीकियां संगठन ने बताई थी, उनको बखूबी धरती पर उतारा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरण बना, उस वातावरण को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए बूथ पर जाकर के काम करके इस योजना को आगे बढ़ाया, सफल किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं आप क्या, आपके साथ साथ मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हूं। इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की आवाज तेलंगाना तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है।
आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। मैं इस मंच से सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है जब अपने परिवारजनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आज भी मेरे मन में यही भाव है। मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के सामने, मैं अपने युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बहनों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के सामने, उन्होंने जो निर्णय, जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं।
और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास
बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितैषी होती है, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांक्षी है और उन्हें भरोसा है कि इस आकांक्षा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। मेरे परिवारजनों, मैं आज हर राज्य के
भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जिस प्रकार अपनी नीति रणनीति को अमल में लाए, ये विजय उसका भी परिणाम है। और चुनाव के दरमियान उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिन रात डटे रहे। साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। और आज हम नतीजे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। 2 दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम ఎల్లప్పుడూ పని చేస్తూనే ఉంటుంది। తెలంగాణతో
మాకు చాలా మంచి अनुबंधम उंडी। मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। भरोसा ये कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर है। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने
24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है,
कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। साथियों, आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है। आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है, आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है। होम लोन में भी, उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। साथियों, आज भारत का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप देखिए, चारों तरफ एक्सप्रेसवे का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जाल बिछ रहा है। भारतीय रेल आज अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। आज देश में नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेनें आ रही हैं, गति नहीं है, संकल्प नए है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं, और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं,
आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है, वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। साथियों, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्रणी देश में पहुंच चुका है। आज भारत में गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है। आज देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। हर गरीब को मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। भाजपा सरकार में 4 करोड़ गरीब परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घर घर नल से जल, ये अभियान तेज गति से चल रहा है। आज देश में रिकॉर्ड गति से नए अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ रही है। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है। भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं। अब इससे पीछे नहीं हटना है, और पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करे। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों में मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस, यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है, वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको
मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है। हमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है, हमें उनके पास पहुंचना है। जिन्हें संदेह है, हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। साथियों, उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच मेरी आदत छूटती नहीं है, तो मैं फिर से वो तो करता ही रहता हूं, क्योंकि मैं मूलतः संगठन से निकला हूं तो स्वभाव मेरा जाता नहीं। मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था ज्यादा समय नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है, वहां साइक्लोन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जरा तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए विजय के महोत्सव में भी मैं तो यही कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना, प्रशासन को पूरा साथ देना, और यही एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार होते हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। साथियों, सबके प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। मुझे देश की अमृत पीढ़ी पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य एक है, साधना एक है, सपना एक है।
भारत विकसित होकर रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। जो भी विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूरा कर पाए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मैदान में जो लोग मेहनत कर रहे थे उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Women, youth, farmers, and the economically weaker sections or the poor, these are the only jati for me, and we will work tirelessly towards their upliftment and towards empowering them. The promise of Prime Minister Narendra Modi that where others stop, my guarantee starts from there. And the fact that the dream of a Viksit Bharat will only be further powered and further strengthened by this phenomenal win for the BJP across Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. He's also thanked the people of Telangana and said that we will continue to work harder in Telangana, and we do not want the spread of the BJP, the rise of the BJP to stop here. इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी is what the PM said, and also mindful of the fact that the southern part and of course some of the eastern coasts of our country are weathering huge amounts of rainfall and some cyclone that is developing in the Bay of Bengal, urging the Karyakartas of the BJP to go out and work harder. Prime Minister Narendra Modi also urging the BJP Karyakartas to empower and to also encourage youth of our country to talk and become Viksit Bharat ambassadors. Prime Minister Narendra Modi taking the vision of a Viksit Bharat, a Bharat that is going to be strong, solid,